Assalamu alaikum, my dear students. Today, our topic will be reproduction in case of angiosperms or reproduction in case of flowering plants. Dear students, these topics are useful for the students of class 12th, for the students of class 11th because they will understand the structure of the flower, and for those students who want to get something about reproductive biology in case of angiosperms. My dear students, you know that reproduction is a basic vital process for all organisms, and it is this process which involves the transfer of genetic material from generations to generations. It is this reproduction which is called as an example of self-perpetuation, because one organism gives rise to next. It is this reproduction, sometimes called as VGT, vertical gene transfer, which involves the transfer of this DNA, this genetic material from parents to offsprings. It involves the transfer of this genetic material from one generation to next generation. बेटा याद रखना है, ये vital process है, basic process है, which maintains the populations, which maintains the continuity of the races and generations here. ये reproduction जो होता है बेटा, आपको पता है, it is of two types. This is basic. If reproduction involves meiosis and synagamy, you must call that it is sexual mode of reproduction. You call this as sexual mode of reproduction. We can sometimes call this as amphimixis. This is called as amphimixis, or this is called as syngenesis. And you must remember, evolutionary sexual mode of reproduction is advanced. It involves meiosis. Where there is meiosis, there is crossover during pituitary stage. Wherever there is crossover, there is recombination, reshuffle. Wherever there is recombination, there are variations. Wherever there are variations, remember there are adaptations and there is survival. So we are saying that the reproduction involving meiosis and synagamy will be called as sexual mode of reproduction. And if reproduction does not involve this meiosis and synagamy, you know that it is called as asexual mode of reproduction. बेटा याद रखना है, जो asexual mode of reproduction in higher plants, in angiosperms, we say this is vegetative propagation. It involves vegetative propagules. It involves root. It involves stem. It involves leaf. Exception, it doesn't involve this flower. So it involves vegetative parts, not the reproductive part. It is asexual mode of reproduction. In plants, it is called as vegetative propagation. Introduction है, जो आपको पता है, I hope, कि reproduction is that biological process which involves self-perpetuation, where one organism gives birth to next organism, where transfer of genetic material takes place. बेटा, जो हमारा टॉपिक है, हमने यही रिप्रोडक्शन देखनी है. हमने रिप्रोडक्शन एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में. सर, व्हाट डू यू मीन बाय एंजियोस्पर्म्स? अगर बेटा आपने इससे पहले मेरे 2 लेक्चर्स देखे होंगे, वहां मैंने किंगडम प्लांटी के बेसिक कैरेक्टर्स को एक्सप्लेन किया. यू नो, लाइफ इज डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम्स एज पर Robert Whittaker's classification, 5 kingdom classification. He divides the life into kingdom Monera, kingdom Protista, kingdom Fungi, kingdom Plantae, and kingdom Animalia. लेकिन बेटा, ये जो kingdom Plantae उसने लिया, this is metaphyta, जिनमें autotrophic mode of nutrition होती है.
प्लांट्स आते हैं। ये किंगडम प्लांटी है, अगर आपको याद है, दिस किंगडम प्लांटी वाज डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। यू नो, देयर वाज एल्गी, देयर वर ब्रायोफाइट्स, amphibians of plantae. There were vascular cryptogams called as pteridophytes. There were gymnosperms. They were forming the seeds, but they were not covered here. Naked seeded plants, and there was a last group, evolutionary advanced group. This evolutionary advanced group was called as angiosperm. मैंने उस टाइम भी बताया था. The word angiosperm is divided from the Greek word angion. You know, angion means vessel, container. And sperma, this sperma means seed. I predict that seed will be closed here. As the term suggests, angion, vessel, sperma means seed. बेटा, ये जो angiosperms होते हैं ना, angiosperms are evolutionary advanced group of kingdom plantae. सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखा है। पहले आपको इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए ना, हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ने जा रहे हैं, रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स में, लेकिन एंजियोस्पर्म वर्ड आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट आपने याद रखा है कि एंजियोस्पर्म्स एवोल्यूशनरी एडवांस्ड है, इसीलिए कभी हम टैग देते हैं, वी कॉल देम एज मैमल्स ऑफ प्लांटी। वी से that these are mammals of kingdom plantae. एक पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये जो किंगडम प्लांटी के एंजियोस्पर्म्स है, these angiosperms are regarded as the largest group of kingdom plantae. I will say, sir, what does that mean? अगर आप एल्गी के स्पीशीज को काउंट करोगे, ब्रायोफाइट्स की स्पीशीज को काउंट करोगे, जिम्नोस्पर्म्स की स्पीशीज को काउंट करोगे, रिमेंबर, अगर आप एंजियोस्पर्म्स की स्पीशीज को काउंट करोगे, it will be among largest group of kingdom plantae. And you have to remember that there are more than 3 lakh species of angiosperms evolving on this earth. So इसीलिए kingdom plantae का सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो एंजियोस्पर्म्स है। और इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपने याद रखना है एंजियोस्पर्म्स के बारे में। दिस ग्रुप इज रिगार्डेड एज डोमिनेंट ग्रुप ऑफ kingdom plantae. So what does dominant group mean? You observed algae restricted to the aquats. You observed bryophytes restricted to the cool, damp places. You observed the pteridophytes, moisture should be available there. If you observe angiosperms, they will be found everywhere almost. Whether it is grassland, you'll find the angiosperm. Whether these are forests, you'll find the angiosperms. Whether there are alpines, you'll get the angiosperms here. Whether you'll observe the oceans, angiosperms will be there. Whether there are freshwater ecosystems, angiosperms will be there. Whether there is the park or lawn, angiosperms will be there. Whether there are, for example, different gardens here, and remember, angiosperms will be there. You have to say that they have colonized almost every habitat, starting from these alpines up to the oceans. They can be found almost everywhere. We have to say that it is regarded as dominant group of kingdom plantae. जरा बेटा मुझे बताइए, हमें क्या पढ़ना है? रिप्रोडक्शन, किनमें? एंजियोस्पर्म्स। आपने वर्ड क्या याद रखा है? एंजियोस्पर्म्स किंगडम प्लांटी का एक ग्रुप है। ये जो ग्रुप है ये एवोल्यूशनरी सबसे आगे है, सबसे एडवांस्ड है। एक पॉइंट। दूसरा, वी कॉल इट एज मैमल्स ऑफ प्लांटी। दूसरी बात है, इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ किंगडम प्लांटी हियर। मोर देन 3 lakh species are present within this angiosperm group here. Third, these are dominant. That means they are found almost in every habitat. They are found in every habitat. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर ये जो एंजियोस्पर्म्स है इनका दूसरा टैग है, वी कॉल देम एज फ्लावरिंग प्लांट्स। जो फ्लावर बनाते हैं, आपको लग रहा है कि रोज ही फ्लावर बना रहा है, साइनोडॉन इज आल्सो इवॉल्विंग द फ्लावर। दीज आर इनकॉन्स्पिशियस फ्लावर्स। सो आपने याद रखना है, जो भी प्लांट्स फ्लावर बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं?
ये हमारा टॉपिक है। जो प्लांट्स फ्लावर बनाते हैं वो एंजियोस्पर्म्स है। एंजियोस्पर्म्स का जो दूसरा टैग है, वी कॉल देम एज फ्लावरिंग प्लांट्स। और समटाइम्स दोज आर आल्सो कॉल्ड एज एंथोफाइट्स। सर आगे मैं आपको बताऊंगा। एंथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फ्लावर। एंथोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ फ्लावर। जो प्लांट्स फ्लावर बनाते हैं ना, वो एंथोफाइट्स होते हैं। सो इंट्रोडक्शन है कि जिन प्लांट्स में आज हमने रिप्रोडक्शन को देखना है, वो प्लांट्स बेसिकली क्या है, यही रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म्स में आज हमने देखना है। लेकिन बेटा यहां से मैंने एक पॉइंट उठाना है, जो लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि एंजियोस्पर्म्स वो वाली ग्रुप्स है जिन्होंने एक फ्लावर को इवॉल्व किया। जिसने फ्लावर को इवॉल्व किया वो एंथोफाइट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म्स है। इसलिए रिप्रोडक्शन कैसे होती है इन प्लांट्स में, ये तब समझ आ जाएगा जब आप एक फ्लावर का, एक टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करेंगे। बेटा हमारा जो टॉपिक है, वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्लावर। यही फ्लावर जो एक एंजियोस्पर्म ने इवॉल्व किया। You simply call it as flower, but it is object of admiration. It is source of inspiration. It is message of love. It is object of aesthetics. It is used for the religions. It is having its own cultural value. It is a big business industry, particularly in the Western countries. हमारे लिए बॉटनी वालों के लिए एक ऑर्गन है, वो ऑर्गन एंजियोस्पर्म्स ने बनाया। सबसे पहले हम फ्लावर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। फ्लावर को एक्सप्लेन करने से पहले बेटा मैं आपको यहां पे बताऊं, सपोज ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, सपोज इट इज एन एंजियोस्पर्म, सपोज ये एक प्लांट है। सुन लीजिए, एक एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस आते हैं। कितने आते हैं? 3 स्टेजेस। एक, जब ये इमैच्योर है, मैरिज के बगैर, वेजिटेटिव फेज में है, जुवेनाइल फेज में। अब दूसरा फेज जो इसका आता है वो रिप्रोडक्टिव फेज आता है, और लास्ट फेज जो आता है वो सेंसेंट फेज आता है। डोंट कंसिडर सेंसेंस एंड डेथ आर synonyms, no. Senescence phase is also part of developmental biology. इसमें भी एक प्लांट नॉर्मली काम करता है, लेकिन इट कल्मिनेट्स विद डेथ। अब एजिंग आती है, अब इतना ये एक्टिव नहीं होता है जितना बाकी स्टेजेस में था, बट प्लांट इज लाइव। सो आपने याद रखना है, पहले वेजिटेटिव फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज, तीसरा सेंसेंट फेज, फाइनली डेथ। अब फ्लावर को अंडरस्टैंड करना है। कहते हैं कि जब इस प्लांट का दूसरा स्टेज आता है, आई मीन रिप्रोडक्टिव फेज, मैच्योर फेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है, बायोलॉजिस्ट्स हैव ऑब्जर्व्ड, डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट्स हैव ऑब्जर्व्ड कि इस प्लांट का जो सेम शूट एपिकल मेरिस्टम है, अब इस शूट एपिकल मेरिस्टम पे एफएम, इट इज फ्लोरल मेरिस्टम, वहां पे इवॉल्व होता है। सर व्हाट इज फ्लोरल मेरिस्टम? इसी फ्लोरल मेरिस्टम से कल जाके फ्लावर तैयार होता है। एक पॉइंट आज आपने सीख लिया, फ्लावर फ्लोरल मेरिस्टम से बनता है डेवलपमेंटली, लेकिन ये रिप्रोडक्टिव स्टेज में बनता है। दूसरी बात है, सर अगर रिप्रोडक्टिव फेज में ये बनता है, इवॉल्व किसने किया? अभी मैंने बताया, इवॉल्व एंजियोस्पर्म्स ने किया। और इवॉल्व क्यों किया? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ये एक एंजियोस्पर्म ने रिप्रोडक्टिव स्टेज में इसीलिए इवॉल्व किया ताकि कल जाके एक एडवांस्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये परफॉर्म कर सके, दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और आपने एक पॉइंट याद रखना है, ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर जहां पे कुछ ना था, but there was nothing, it was simply SAM, shoot apical meristem. Now there is floral meristem, there is bud, there is flower. You have to say this flower is actually modified shoot. जरा आप
ये पॉइंट्स को याद रखिए, ये मॉडिफाइड शूट है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के लिए मुझे चाहिए इस प्लांट में। ये एंजियोस्पर्म्स ने इवॉल्व किया और ये फ्लोरल मेरिस्टम से बनता है रिप्रोडक्टिव फेज में। अगर हम ये पॉइंट्स लेंगे, वी कैन डिफाइन फ्लावर। वी विल से a flower is defined as a modified shoot. This is a modified shoot evolved by angiosperms, evolved by flowering plants during reproductive phase, during mature phase, to bring about a sexual, no, to bring about sexual mode of reproduction. जरा बेटा आप भी डिफाइन कीजिए। फ्लावर कैन बी डिफाइंड एज ए मॉडिफाइड शूट evolved by angiosperms during reproductive phase to bring about sexual mode of reproduction. सो एक फ्लावर की डेफिनेशन है। इसके बाद if you get this, आपको मैं बताऊं, flowers have tremendous diversities. There are different types, different colors. Remember, अगर हम फ्लावर की मेन टाइप्स को यहां पे बताए रिगार्डिंग अवर यूनिट दैट इज रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी, पहला पॉइंट मैं आपको यहां पे बताऊंगा। A flower can be called as a complete flower if it possesses all four whorls. अभी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। एक फ्लावर के 4 whorls होते हैं डायग्रामेटिकली, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अगर एक फ्लावर में ये चारों के चारों whorls प्रेजेंट है, जरा बेटा मुझे बताइए इस फ्लावर को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर। वाइल एज अगर एक फ्लावर के पास इन 4 whorls में, इन whorls में कोई whorl एब्सेंट है, रिमेंबर दिस फ्लावर शुड बी कॉल्ड एज इनकंप्लीट फ्लावर। सो वी हैव टू से इनकंप्लीट फ्लावर में कोई whorl जो होगी दैट विल बी एब्सेंट। आपने याद क्या रखा? फ्लावर्स आर ऑफ डाइवर्स टाइप्स। दिस big classification for these flowers here. We have to say a flower should be called as complete flower when all the 4 whorls are present. A flower should be called as incomplete flower when the some of the whorls like calyx, corolla or any other whorl, it will be absent. Here a classification. दूसरी classification on the basis of sex. A flower can be called as perfect flower if it has both androecium male reproductive whorl as well as gynoecium female reproductive whorl। हमें एक्सप्लेन करना है। एंड्रोशियम में मेल गैमीट बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव वॉल। गाइनोशियम में एग बनती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल है। अगर एक प्लांट के पास, अगर एक फ्लावर के पास ये दोनों वर्ल्स प्रेजेंट होंगे, you must call that this flower is actually perfect flower. You can call this flower as bisexual flower. You call this as bisexual flower. We can call this as hermaphrodite. It's having the property, zwitter property. Both the worlds are present. Like rose, you can understand. Androecium and gynoecium are present within the one flower. और अगर एक फ्लावर के पास या ये प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है ये एब्सेंट है, या ये प्रेजेंट है, जाहिर सी बात है ये एब्सेंट है। अगर एक प्लांट के फ्लावर के पास इन 2 रिप्रोडक्टिव whorls में एक रिप्रोडक्टिव whorl एब्सेंट है, we must say biologically that the flower is imperfect flower. बेटा, you say it is imperfect flower, we say that it is unisexual. अब इसके 2 टाइप्स हैं। अगर
एक फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव वॉर्ल है, तब ये मेल फ्लावर है। अगर इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉर्ल है, देन इट इज कॉल्ड एज फीमेल फ्लावर। दिस इज मेल फ्लावर, दिस इज फीमेल फ्लावर, दिस इज स्टैमिनेट एंड दिस इज कॉल्ड एज पिस्टुलेट फ्लावर। बेटा ये इंट्रोडक्शन थी, एंड इंशाल्लाह in the next lecture we'll continue the topic. Inshallah we'll move forward. Best of luck.